Hello everyone, welcome back to the channel CUT by Dream University. I am Rashwini and this is part 4 of our series. We were discussing CUT 2025 question paper. In this part, we will cover from question number 46 to 60. And also, if you want to practice more such questions, you can enroll in our test series. The link is in the description box. So let's start from question number 46. Question number 46. If the demand function is given as P equals to 100 minus Q square and market equilibrium is attained at price 29 and quantity 9, calculate the consumer surplus. Okay, so it is a routine question and we know that consumer surplus equals to integration of output function in terms of prices minus equilibrium price multiplied by equilibrium quantity, right? And लिमिट्स हमारी रहती है 0 to क्वांटिटी. हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, राइट? सो वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज. We have output function given as 110 minus q square, limits from 0 to q is equals to 9, minus equilibrium price is given as 29 multiplied by quantity 9, right? So हम इंटीग्रेट करेंगे, ये होगा 110 क्यू माइनस क्यू क्यू divided by 3 from 0 to q minus this will be 261, right, equals to, now we will put the values. q है हमारा 9, so 9 minus 9 q divided by 3, right. नहीं, माइनस 0 होगा तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई होगा 0, माइनस 0 का क्यूब 0, तो हमें बचेगा हमारे पास, राइट, माइनस 26. ओके, एंड अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 486. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. ओके, सो ये इजी था और काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था सीवीटी का. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. Okay. In the context of Keynesian concept of multiplier, a $1 increase in government expenditure, spending financed by government spending financed by $1 increase in taxes will cause equilibrium income. So हमें equilibrium income फाइंड करनी है. क्वेश्चन में गिवन है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, चेंज हो रहा है बाय $1, और उसको टैक्स से फाइनेंस किया जा रहा है, वो भी चेंज कितना हो रहा है, $1 से, राइट. सो हमें इक्विलिब्रियम इनकम, राइट, मतलब चेंज इन इनकम फाइंड करना है. वी नो चेंज इन इनकम इज मल्टीप्लायर इफेक्ट multiplied by autonomous increase in आउटपुट, राइट. तो हमें पता है हमारी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है $1 की, उतना ही हमारा आउटपुट होगा इंक्रीज. अब हमें मल्टीप्लायर इफेक्ट कैलकुलेट करना है. सो मल्टीप्लायर इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है दो तरीके से, एक गवर्नमेंट मल्टीप्लायर और एक टैक्स मल्टीप्लायर, राइट. गवर्नमेंट मल्टीप्लायर एंड टैक्स मल्टीप्लायर. गवर्नमेंट मल्टीप्लायर वी नो equals to 1 upon 1 minus c, and tax multiplier is minus c upon 1 minus c, and where c is MPC, राइट. तो इसे हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे मल्टीप्लायर इफेक्ट फाइंड करने के लिए टोटल. सो टोटल मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा, 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी इक्वल्स टू 1. सो वैल्यू हमारे क्या आई मल्टीप्लायर की 1, एंड दिस 1 इसमें मल्टीप्लायर होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 1, राइट. सो हमारा क्या होगा, क्या अनचेंज रहेगा, नहीं. इंक्रीज बाय $1, यस, राइट. डिक्रीज बाय $1 नहीं, डिपेंड्स ऑन एमपीसी, बट यहाँ पे एमपीसी तो हमारा का इफेक्ट यहाँ पे नल हो गया है, राइट. तो करेक्ट ऑप्शन
2 is the right answer. Now let's move to next question. Okay, question number 48. Match the following. We have here टाइम सीरीज पैटर्न्स और हमें उनके मीनिंग से मैच करना है. ऐसे क्वेश्चंस में वर्ड गेम से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है. दैट इज वी हैव टू आइडेंटिफाई कीवर्ड्स. ओके, सो फर्स्ट इज सीजनल वेरिएशन, second random fluctuation, third business cycles and fourth is trends. Okay. Options पर देखते हैं. movement in an economic variable that is periodic, economic variable, ठीक है. steady movement in an economic variable over time. Okay, movement in an economic variable that depends on the time of the year. So we know time of the year मतलब यहाँ पे किससे मतलब है, सीजन से, राइट. तो हमारा सीजनल वेरिएशन ऑप्शन नंबर 3, राइट. ऑप्शन नंबर 3 हमें ओके यहाँ पे मिल रहा है. देन मूवमेंट इन एन इकोनॉमिक वेरिएबल दैट आर ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फैक्टर्स. यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रैंडम फ्लक्चुएशंस की, राइट. सो बी का हमारा ऑप्शन नंबर 4. तो मेरे पास दो ऑप्शन में बी का 4 है. ओके, अब हमें पता है कि पीरियोडिक मूवमेंट की बात हो रही है. सो दिस इज बिजनेस साइकिल. एंड स्टेडी मूवमेंट है तो मतलब ट्रेंड की बात हो रही है, क्योंकि ट्रेंड ही कुछ टाइम तक रहता है, राइट. स्टेडी मूवमेंट. तो फिर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट एंड डी का सेकंड. सो ए इज अ करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 49. Which of the following is not a type of non-random sampling? Okay, random sampling क्या होती है? random sampling में हमारे पास हमारा सैंपल होता है, उसमें हर एक का सिलेक्ट होने का चांस क्या होता है, इक्वल होता है, राइट. बट नॉन रैंडम सैम्पलिंग में हमें रिसर्चर के कन्वीनियंस पे, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पे, स्पेशल क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है कि हमें सैंपल कैसे सिलेक्ट करना है. तो हमें नॉन रैंडम सैम्पलिंग पे यहाँ पे देखना है कि इसमें से कौन सा नहीं है. फर्स्ट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग. तो ये किसके कन्वीनियंस पे हो रहा है, रिसर्चर के. तो क्या ये रैंडम सैम्पलिंग है, नहीं, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है. सो दिस इज करेक्ट. देन क्लस्टर सैम्पलिंग. क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, हम पूरे सैंपल्स को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, राइट. क्लस्टर बनाते हैं और उन क्लस्टर्स में से हम किसी एक को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं. सो इट इज अ टाइप ऑफ रैंडम सैम्पलिंग. यस, सो इट इज नॉट नॉन रैंडम सैम्पलिंग. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. कोटा सैम्पलिंग में हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करते हैं, लाइक एज, इनकम, राइट. सो दिस इज नॉन रैंडम सैम्पलिंग. एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग में भी हम लोग जो है रेफरल्स, कॉन्टेक्ट्स और हमारा इफेक्ट इस पे फोकस करते हैं कि लाइक एक पर्सन को हमने सिलेक्ट किया, फिर वो हमें रिफर करता है दूसरे पर्सन को, फिर वो हमें किसी को रिफर करता है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ रैंडम सैम्पलिंग. सो दिस इज करेक्ट, नॉन रैंडम type of non-random sampling. So correct option is second. Okay. Now let's move to next question. Question number 50. Arrange the following scholarly contribution in their chronological order starting from the oldest to latest. First is Calder his compensation criteria. Second, Bergson social welfare function. Then third is Rawls principle of social justice and fourth is Pareto optimality criteria. Okay. So हम सबसे पहले जब welfare economics पढ़ते हैं, so first we study about Pareto optimality criteria given in 1806, right? 1906. Okay. Right. उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, बर्ग्सन सोशल वेलफेयर फंक्शन पढ़ते हैं, right, which was given in 1938. Then we study Calder's compensation criteria given in 1939. And lastly, Rawls principle of social justice in 1971. So correct answer is option number 2. Next question. Question number 51. Which of the following is incorrect about the problem of externalities? They may be reciprocal or unidirectional. Reciprocal का यहाँ पे क्या मतलब है,
कि फॉर एग्जाम्पल फर्म है जो कि रिवर पॉल्यूट कर रही है, राइट, तो उसको बेनिफिट हो रहा है, राइट, उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है क्योंकि प्रोडक्शन कर रही है। और जो पीपल हैं जो कि उस रिवर के अराउंड रहते हैं या जो घर हैं, तो वहां पे क्या डिसयूटिलिटी क्रिएट हो रही है, दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, सो उन्हें लॉस हो रहा है। सो दिस इज अ रेसिप्रोकल इफेक्ट। ऑल्सो यूनिडायरेक्शनल मतलब कि वन पार्टीज एक्शंस अफेक्ट अदर्स, राइट, यूनिडायरेक्शनल है, दिस इज करेक्ट। Then second is they refer to an interdependence between two parties that operate outside the price mechanism. Yes, this is correct. Option third is they may be marginal or inframarginal. Okay, marginal मतलब कि वन यूनिट के एडिशन से भी हो सकता है एक्सटर्नलिटी, और इंफ्रामार्जिनल मतलब कि जो ऑलरेडी प्रोडक्शन में कंजम्पशन हो चुका है उससे इफेक्ट पड़ रहा है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर ये रिवर है, राइट, मान लो 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन ने फर्म्स ने किया, इस फर्म ने, और इसको पॉल्यूट कर दिया, राइट। अगर वो अब एक और यूनिट का प्रोडक्शन करती है, राइट, अगर अब 101 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रही है, तो भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटी क्रिएट हो रही है। और जो ऑलरेडी वो क्रिएट कर चुकी है, ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुकी है, उससे भी हमें जो है डिसयूटिलिटी क्रिएट हो रही है, राइट। सो दिस इज इंफ्रा मार्जिनल, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Then the right of internalization of the negative externality requires that both the parties must gain. क्या ऐसा है? Clearly no. तुम्हें पता है गेन नहीं, एक लूज करती है और एक पार्टी गेन करती है। सो इनकरेक्ट में बताना था, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, यहाँ पे ये गलत, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। Which of the following is not correct about the effectiveness of monetary policy and fiscal policy under perfect capital mobility? So सबसे पहले हमें पता है कि अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है या फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, सो हमें पता है कि कौन सा पॉलिसी वर्क करती है कौन सी नहीं, राइट, क्योंकि दिस वी हैव स्टडीड इन मंडेल फ्लेमिंग मॉडल। ओके, सो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है मतलब कि गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करने वाली एक्सचेंज रेट को, तो गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी होती है? फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होगी? इफेक्टिव होगी, और मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी। तो फ्लेक्सिबल में जो है सेंट्रल बैंक अपना रोल प्ले करती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होगी? इफेक्टिव होगी, फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव नहीं होगी, राइट। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। Now let's read the options. Under the fixed exchange rate, monetary policy is powerless to affect output. Yes, this is correct. Under fixed exchange rate, central bank runs an independent monetary policy. फिक्स में मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक रन करता है? नो, वो तो इफेक्टिव ही नहीं रहता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। अंडर द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिस्कल पॉलिसी इज हाईली इफेक्टिव। यस, फिक्स्ड में हमारी फिस्कल पॉलिसी इफेक्ट कर रहती है, इफेक्टिव, this is correct. And under floating exchange rate, monetary expansion leads to currency depreciation, increased exports, and increased output. So yes, this is correct. Okay. So right answer is option number 2. Now let's move to next question. Which of the following statements are correct about the money multiplier? It is the ratio of the stock of money to the stock of high powered money. Okay, so we know money stock या money supply equals to multiplier multiplied by monetary base. monetary base को हम और क्या बोल सकते हैं? हाई पावर्ड मनी। अगर हम इसको इधर ले जाएं, सो इट बिकम्स मल्टीप्लाई इक्वल्स टू मनी सप्लाई और मनी स्टॉक अपॉन monetary base और high powered money, right? So it is the ratio of money stock to the stock of high powered money. So this is correct. It is always smaller than 1. No, it can be greater than 1, right? Then its value depends on the reserve ratio and currency deposit ratio. So हमें मल्टीप्लायर का ये भी पता है फॉर्मूला, दैट इज इट इज 1 प्लस करेंसी टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो अपॉन करेंसी टू डिमांड डिपॉजिट रेशियो प्लस रिजर्व
to demand deposit ratio plus excess reserve to demand deposit ratio, right? So क्या ये इसकी वैल्यू रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करती है? यस. करेंसी डिपॉजिट रेशियो पे? यस. दिस इज करेक्ट. It is inversely related to the reserve ratio. Yes, clearly. This is right. So our right answer is A, C, D. That is option number 3. Now let's move to next question. Question number 54. In Solo's growth model, the output per capita is a function of. Okay. Solo's growth model में हम क्या पढ़ते हैं कि output is a function of capital and labor. राइट. हमें पूछा है कि आउटपुट पर कैपिटा मीन्स हम आउटपुट को लेबर से डिवाइड करेंगे. सो इट विल बिकम 3/L and L/L. राइट. We represent this by small y equals to function of small k and this is 1. So this. So यहाँ पे आउटपुट पर कैपिटा किस पे डिपेंड कर रहा है? कैपिटल लेबर रेशियो पे, राइट. सो यहाँ पे कैपिटल लेबर रेशियो ऑप्शन नंबर 1 में ही है. सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर. कैपिटल आउटपुट रेशियो नो. लेबर आउटपुट रेशियो नो. टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस नो. Therefore, our correct option is option number 1. Next question. Question 55. Arrange the following theories in chronological order starting from oldest to latest. Keynesian theory of demand for money. It was given in 1936. Quantity theory of money, QTM. Right, पेशन ने दी थी in year 1911. Then Cambridge cash balance approach, मार्शल और पीगू ने कंट्रीब्यूट किया था इसमें in 1970. And modern quantity theory of money by Friedman in 1956. Okay. So सबसे पहले हमारा ऑप्शन B, then C, then we have A in option number 3 and then D. So correct answer is option number 3. Next question. Question number 56. Which of the following is not true about the classical and Keynesian aggregate demand and aggregate supply schedule? First, classical aggregate supply schedule is vertical. We know that this vertical aggregate supply fixed होती है, so this is correct. Keynesian air schedule slopes upward to the right. Yes, upward slope करता है, right? Then classical AD schedule depends only on the level of money supply. This is also correct, जो कि एक और क्वेश्चन हमें आया था, हमने डिस्कस भी किया था इस पे. Then Keynesian AD schedule depends only on the existing capital stock. We know that AD equals to consumption plus government expenditure plus investment plus exports minus imports, right? तो क्या ये सिर्फ existing capital stock पे डिपेंड करता है? No. So this is not correct. और हमें बताना था कि कौन सा करेक्ट नहीं है. So option 4 is correct answer. Next question. Question number 57. The Pareto optimality criteria implies fulfillment of all the following condition except. हम बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है. Option number 1, the marginal rate of transformation between any two goods equals to the marginal rate of substitution between two same goods. क्या हमारा MRTS between two goods equals to MRS between two goods? Yes. We know the conditions, right? Economy is operating on its production possibility frontier. क्या economy PPF पे work करता है? Yes, this is also correct. Production techniques embody the most efficient technology. Yes, this is also a condition. Income is distributed fairly among all the individuals. क्या हमने Pareto optimality में ये बात करी, ये डिस्कस किया है कभी? नहीं. And this is a limitation, right? So this is the correct option. Next question.
Which of the following does not constitute liabilities of commercial banks in India? Option A, paid up capital and reserves, time and demand deposits, money at call and short notice, and borrowings. So we know commercial बैंक में जो भी हम डिपॉजिट करते हैं, राइट, वो उसकी लाइबिलिटी होती है, राइट, दिस इज लाइबिलिटी ऑफ कमर्शियल बैंक्स. अगर कोई बैंक या कोई भी पर्सन कुछ बोरो करता है तो वो उसकी लाइबिलिटी होती है क्योंकि उसे हमें वापस करना है. ठीक है. रिजर्व्स डिपॉजिट्स का पार्ट होता है. पेड अप कैपिटल हमें रिटर्न हमारी लाइबिलिटी होती है. बट अगर मान लीजिए बैंक ए है, बैंक बी है, अगर बैंक बी ए से शॉर्ट नोटिस पे या फिर कॉल मनी लेता है, बोरो करता है, तो बैंक बी ए से बोरो करा तो ए के लिए इट विल बी एसेट, राइट. तो कमर्शियल बैंक के लिए अगर उसने मनी एट कॉल या शॉर्ट नोटिस पे दिया है तो इट विल बी एसेट फॉर देम. So this is not a liability. So correct option is 3. Now let's move to next question. Question number 59. Which of the following is not correct about the offer curve? Okay. A. Offer curves were devised and introduced in the international economics by Marshall and Edgeworth. Yes, this is correct. The offer curve of a nation shows the nation's willingness to import and export at various relative commodity price. This is also correct. This is the basic definition of offer curves. The offer curve of a nation can be derived from the nation's production frontier. Yes, हम उसके production frontier से derive करते हैं. Offer curve of a nation bends towards the axis measuring the commodity of its comparative disadvantage. This is wrong. Why? When we draw offer curves, manage this is offer curve of country A and this is offer curve of country B, right? And this is X commodity, this is Y commodity. So A का ऑफर कर्व कहाँ X एक्सिस पे के टुवर्ड्स बेंड कर रहा है, राइट. और यहाँ पे जो X कमोडिटी होगी वो एक्सपोर्ट करेगा, राइट. और हम एक्सपोर्ट कौन सा कमोडिटी करते हैं जिसमें हमें कंपैरेटिव एडवांटेज हो, राइट, ताकि डिसएडवांटेज. सो यहाँ पे डिसएडवांटेज नहीं एडवांटेज होता तो वो करेक्ट होता. तो दिस इज नॉट करेक्ट. So correct answer is option number 4. Next question. Question number 60. Okay. Given the two matrices A and B, find AB. Okay. So हमें इन मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है. A matrix is given as 1 2 4 3 8 0. इसका ऑर्डर होगा 3/2, then 5 and 9. The order will be 2/1. क्या हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस, क्योंकि यहाँ पे this n equals to m. Okay. So let's solve this. We know the matrix multiplication. 5, 27, 10, 72, 20 plus 0. And it will be of order 3/1. Okay. 32, 82, 20. So the answer will be 32, 82, and 20, option number 1. Okay. So these were question till 16. So thank you for watching till the end. In the next part, we will start from question number 16. Thank you.